Success is not measured by what you accomplish, but by the opposition you have encountered and the courage with which you have maintained the struggle against overwhelming odds. Every individual on the globe strives to paint their success story on the canvas of life. We all have days when our spirits are down and our morale hits the rock bottom. Listening to the anecdotes of personalities who carried till they achieved their dreams, overcoming every obstacle, is what you need at times. So, if you want to fire yourselves up, this place is just the right one for you. Good evening to everyone present here. I would like to welcome you all on behalf of Team ISTE SC MANIT Bhopal to Cognition 22, a series of illuminative and enlightening webinars under our annual technical conclave version beta 5.0. Firstly, let's look down memory lane as to why ISTE SC MANIT is one of the Central India's largest technical societies. ISTE SC MANIT, established in 2003, is a non-profit organization that strives to create comradeship amongst the students and offer them a venue to develop skills by making learn fun and engaging. ISTE conducts a blend of intellectually challenging and exhilarating events ranging from captivating talk shows, quizzes to mind-boggling cryptic hunts and stimulating hackathons. One of our such fascinating conclaves is Version Beta, our annual technical conclave. To quench the thirst of tech enthusiasts, we organize our annual technical conclave version beta. It is Central India's largest hackathon, welcoming immense participation from the entire country. It consists of an enthralling 36-hour-long hackathon, which is preceded by illuminative workshops on Flare Heaven, and then Cognition, which is the center of attraction for today. Version Beta provides a platform to foster technological and entrepreneurial skills and growth for future world leaders, developers, and entrepreneurs. So now let us tell you all about today's event, Cognition. Sometimes, motivation is the final piece in the puzzle called success. Thus, to motivate and enlighten students to pursue their dreams with the best possible guidance, ISTE Manit organizes Cognition, a series of webinars. In the past few years, notable personalities with outstanding contributions in the domains of entrepreneurship and technology have delivered webinars, interacting with youngsters to ignite their minds. Some of the distinguished speakers who have graced the webinar previously include Mr. Narasimha Karumanchi, founder of CareerMount and principal software engineer at Microsoft, Mr. Sandeep Jain, founder of Geeks for Geeks. Joining the stellar lineup of speakers for this edition of Version Beta, we have Ms. Arshi Khan, founder of College Khabri, and Mr. Abhilash Bhardwaj, scientific officer at Bhabha Atomic Research Center. The event is highly anticipated by technocrats who seek enlightenment through the experiences and successful journeys of our speakers. Now, as the clock ticks, it's time to invite our first speaker to enlighten us all with his words of wisdom, for which I would like to hand over the virtual mic to my colleague Suhani. Beginning with an intriguing session, we now have a distinctive personality among us, a scientific officer at Bhabha Atomic Research Center, Mr. Abhilash Bhardwaj. An excellent academic, his various accolades include All India ranks 9 in ISRO and 19 in GATE CS20 and a lot more. A recipient of the Homi Bhabha Award, he has completed his BTech degree in Computer Science from IIIT Bhubaneswar and postgrad from Homi Bhabha National Institute, Mumbai. So here we invite Mr. Abhilash Bhardwaj on virtual stage. Over to you, sir. We all await to listen to your words of enlightenment. Thank you so much, Suhani, and it's pleasure talking with you guys at Manit Bhopal. You are literally in a very good college, so at least enjoy the college and learn from your seniors. Okay, so I am just an atom in service in Bhabha Atomic Research Center, Abhilash. So I will not take much of your time, and I will try to make this session as interesting as possible. I know their online lectures are pretty boring, but I'll try to make fun of out of it.
So I'll present something to you guys. We'll be talking, we'll be interacting. Can we interact to the people who are listening to us, or there will be one only high session will be going on? So the audience will be joining from the Q&A, like they can comment on the video. Okay, okay. So Yes, you can yes, comment. You can comment on the yes, sir. video, or if any questions or anything you guys have. Yes, sir. Okay, so I'm presenting. One second. So I'm beginning out my presentation, that is atoms for society, energy, healthcare, and security. So basically, I'll be discussing some of the societal applications that we are working on in the Department of Atomic Energy, and also will be something like scrolling over the world researches like Large Hadron Collider and the Elon Musk startup like Neuralink and other things. So I'll be beginning off first thing, that what will be the outline of my slide. That is very simple. There are two things we'll be discussing. First thing, we'll be diving the new researches, what things are going on, what is going on BRC, where we fit. If I am the computer science engineer, where I fit in the BRC, it's a nuclear organization, where the mechanical guys fit, where the chemical guys fit, and where the instrumentation guys fit. Because ultimately, if we see that some organization is working for like nucleus or reactors or accelerators, like I want to join, so where I can join, where I'm fitting at that organization. So we'll be diving with the applications, with the researches, we'll be diving in the researches, and we'll be fitting ourselves where we fit in that. And the second part of my presentation will be very small, that is scrolling, like we scroll on Instagram. And Sorry, am I audible? My slide is going on. So there is some issue with your audio, so Oh, audio issue with audio. Now it's okay. yes, sir, now it feels fine. Should not be actually. Now it's okay, Suhani. Please check. Okay. Yes, sir, you're audible now. I'll try to join again once. Yes.
Yeah, am I audible now, guys? Yes, sir. Okay, thank you. Sorry for the glitch. Okay, was there something? I'll share again. Okay, so what we were discussing that time, that we'll be diving off and we'll be scrolling also. So the second part, so let's start with the energy thing. At where that BRC or Department of Atomic Energy is working. So let me begin with a very fascinating research going on in DeepMind. That is the now actually acquired by Google. The DeepMind, what they have done is that they have balanced the plasma. So in class 12, we have discussed, we know that class 11, 12, that there are five states of matter, and one of the state of matter is plasma. That is a very high, you can say, temperature form. That what happens at the sun surface. So that plasma, where only the fusion can possible. Fusion, for fusion, we need a very high amount of temperature that is possible only in the plasma. So DeepMind, what they are doing, because the contain you can see here, there is a containment where they are holding the plasma. Any surface or any material cannot hold the plasma directly. It cannot touch it. So we, due to magnetic, we establish something kind of magnetic behavior so that we can hold the plasma in between. So DeepMind, using the deep learning and reinforcement learning techniques, they have actually found the algorithm so that they can balance the plasma using the magnetic fields. So that is a field we're going on, and a lot of research is going on in the fusion reactors. That was a basic I thought of introducing this thing at the initial stage. And you already know, some of you guys may have heard that ITER in France, they are making a fusion reactor. Collaboration of every country is there. Even India is collaborating that thing. And we have an institute called Institute of Plasma Research in Gandhinagar that is collaborating in development of the cryogenics and the other systems of the ITAR. And we have the collaboration. Even some of the college students also go for internship there in ITAR in France, or to from work from home also. So they kind of thing. So please check out what is ITR and how the computer science and other field of engineers are working in this particular project. So moving ahead, let's understand the power first. So I think most of you guys have been known about the Chernobyl series. That is on, I think, HBO, and also available on Disney and Hotstar. So please watch it. So in Chernobyl, basically they have shown that in early stage how a nuclear reactor works and how it can destroy the lives around it. How difficult to maintain that power and how difficult to manage it. So at that time, I'm just introducing that is a very small amount of uranium can generate a large amount of power, and so it's much. You can say that when you're using petrol or diesel or anything, so that a lot of amount or even a coal, a lot of amount is needed to generate the electricity and much amount of power. But in nuclear, specifically the uranium and plutonium or whatever things you're using, that can generate immense amount of power using a very small amount of the material. So that's why it's dangerous also. Even you know that even a 10 kg bomb can destroy a lot of area, a lot of mankind, the you can say the life using that 10 kg of plutonium or uranium thing. So moving ahead, let's say about the Indian nuclear power program. I'm just introducing because if you guys want to join this organization or you want to join, suppose, any research field, you should know about the where India is heading. Other than the conventional fields, we are also heading towards a different fields, and that's a really a challenging area. You guys will be in first, second, third, and fourth year of engineering, but at that time you have just a problem of like reading and just passing the exams. Other than that, there are literally different problems and research fields where people are heading. So initially, Homi Jahangir Baba has designed the three-stage nuclear program, where currently we are in the first and second stage mix of time, and we are working on pressurized heavy water reactor, that is uranium fuel, that we use uranium. And the second stage we want that we will be using plutonium, and at the third stage we have a lot of thorium reserves in Kerala, monazite reserves. So we'll be using thorium because we don't have much of the uranium, so we'll be using thorium and uranium 233 fuel reactors. Definitely, at that point, suppose we will be using thorium, so energy crisis can be solved. Okay, because there is a in coal a lot of carbon dioxide is there, but in this case you don't get that carbon dioxide ever. So we sometimes say that's the green energy. Okay, so moving ahead with that, that's what the program initially designed, and we are working on that thing. Initially, first and second stage is going on. So current state we have.
Rawat Bhata, Kakrapar, and some of the places like Kalpakkam, Tarapur, we have nuclear power reactors, just for introduction. But the main challenge I am showing is the closed fuel cycle. See what happens in other countries that they use uranium, they make their energy, and after that, whatever waste is being generated, they deposit somewhere. They cannot deposit near to our wherever our cities are, wherever our villages are. But apart from like some place away or some dump yard, they make it, and very deep dump yard, like 10 meters, 50 meters, or much beyond that also. So they dump it there. But suppose after 10 years or 10,000 years, when generations will pass and somebody will dig that, that will be very difficult. Okay, because that will generate radioactivity and again that will harm us. So India doesn't follow that. India follows closed fuel cycles. We take it, we use it, and we reprocess it. And whatever we dump in a such a safe word so that, yeah, further coming generation should not affected of that. So we use a closed fuel cycle, and that itself is challenging. I'm just giving a simple example that semiconductor physics, whatever you're using the semiconductors, they are all based on NPN junction and transistors. Okay? So there, a simple amount of radiation, gamma radiation, can destroy your PN junction barrier, and that electronics cannot be used here. So the challenge is that you cannot directly handle this thing. So at that time, even closed fuel cycle, suppose you are using a spent fuel, that already is something, it's a potential bomb, you can say, kind of like, suppose if the radioactivity is still there. Okay, so you cannot directly use it and directly handle with your hand. So a lot of equipments and other things are required to transport it, to deposit it, to reprocess it. So electronics different, like the electronics also you'll use, you cannot use the normal day-to-day electronics because it will be harmful anyway. If you get the direct contact of it, it will harm you, cancerous and anything can be possible. So we have to handle it. So that's what the challenge comes from. That is the thing. Moving ahead, so where do we fit? I think I will like to know that if somebody knows this picture, if anybody can comment in comment section that they do know that what is I'm showing off here. Anybody, please, can you tell that this picture belongs to which place? Okay, leave it. Somebody not replying. But I'm just telling you this is a CERN, a large Yes. hadron. Okay, so that is a big facility, and CERN is actually working on that big that experiment of Higgs boson and other things. And sometimes that nuclear engineers also, okay, from BRC, from DA, they used to go that CERN place and they used to contribute for this project also. So I'm just telling you where do we fit in this system. So there are different type of techniques. There's CNI system, control and instrumentation system, for accelerators for nuclear reactors. There, the instrumentation engineers, electronics engineers are required. The simulators, because we cannot directly test it to nuclear reactor, it will blast. Nothing can be done. So that time we need a simulators, like whether the theories are working or not. We need a simulator. We need, whenever whatever image you are seeing here, that is based on cavity, and you will that electronics engineers and electrical engineers will learn about that EMT, electromagnetic theory. So there you will get to know how the cavity should be designed, how the modes and waveguides, terms, their jargons, you will learn about them. That is required. Materials are very important. If you will tell me that suppose that much temperature is generating in a nuclear, and there are like continuous bombarding of neutrons are going on in a chamber of nuclear reaction, you need a material to sustain that. Then material should not bulge, should not touch each other. Okay, that should not break out the containment, because this is the difference. So where our materials, our mechanical engineers, our metallurgical engineers, they work on that material will sustain that much heat or not. How to design that material, that how to thermal conductivity, like how to maintain the thermal conductivity so that the coolant can pass. They can take out the energy. So everything they have done, designing, in designing, even containment designing, civil engineers are there, chemical engineers are there, mechanical engineers are there. So everything is there. For computer science people, they have a lot of work in data analysis, visualization, storage of data. Even you, in LHC, they have a lot of amount of data generating. So the big data system was started like earlier in that area. They have been using big data system for that storage of that amount of data. Like every second they have generating a huge amount of data. Analysis is there.
So that computer science engineers are a lot of contributing for the LHC also. So containment is very much required, because suppose anyway whatever reaction chamber is there, suppose it will blast, you need something that defense and depth, that it will blast, then something should be there. So the engineers have a challenge, and a lot of interdisciplinary works are there in the energy sector, in the nuclear field. So if you'll come here, you'll get that thing. So that is the thing. Moving ahead with the healthcare, I'll be focusing a bit about healthcare. So introducing with that Bhavatron. So we have a device called Bhavatron. You can see that is for external beam therapy. So cancerous cells are there. So you need to cobalt 60. We put a cobalt 60 that is continuously emitting the beam. But the continuous emission of beam has to be controlled. I'm telling you. Suppose there is a cobalt 60 source that is continuously emitting rays from it, that radioactive element. So what we need to do, if it will fall to a healthy tissue, definitely it will harm it. It will cause cancer then. Rather than curing it, it will cause it. So at that time, you have to maintain something that it should go to the directed tissue. Okay, that should be controlled until it should not be over. It should not be less. If it will be less, reoccurrence of the uh, that phenomena or cancer will happen definitely, because the cells are not died. And if it will be more, it will harm the healthy tissues. So finally, there is a controlling beam amount and direction is a challenge for us. So that is actually Babatron is a successful product of Baba Atomic Research Center that is being deployed in multiple places of all over India. So they use for external beam therapy. So again, cobalt 60, sometimes you have to generate also that radioisotope we need. So the production also happens there. So again, that is a different field. So they we have a research reactors for generating isotopes also. So we generate isotope, we put it in that machine, we develop a system so that we can control the beam, we can control the direction. Again, there will be interdisciplinary works. So that system is again working in all over India, and we are again developing it. It's going further and further. So second point I'll be highlighting, there are a lot of work are going on, but we can in a lot like it's short span of time we can discuss few things which may interest you. Okay, so the second point is like robot assisted neurosurgery. I'll be linking at the end with the Neuralink. This thing, the Neuralink is from Elon Musk. I'll be linking this particular technology with the Neuralink at the end of my presentation. But I'm just telling you what is this robot assisted neurosurgery. The challenges also. So what happens actually when we are when we are working in a system like suppose surgery, like here is a head and we want to doctor, what they do is they put a hole inside it and they go inside with the autopsy or biopsy needle and do it the surgery. But suppose the how much precision is required inside a brain, because you cannot put a camera inside. There's no much, not much space is there, so you cannot put a camera, big camera, like inside, like other part of body are not that much sensitive, but brain is highly sensitive. A small deviation from the surgery point, death, simple death. Okay, so what benefits it will give you? Suppose I'll design a robot assisted neurosurgery. What benefits it? So the first benefit what you get is that there will be minimally invasive. Minimally invasive means not very small amount of hole you have to drill here, and very small destruction of other tissues will be there. So minimally invasive. There will be, well, it can be fast cured. Okay, it will be very efficient. Okay, time will be less. The person suffering before and after the surgery will be less. And at the end, I will be telling why it is again needed for that brain computer interface. This surgery is required. I'll be telling that. So benefits I have already told. Then what are the challenges I'm telling? So I'm just starting with a small point. Suppose you go for MRI and then come out with a diagnose with that thing that you have a point where a tumor or something biopsy is needed at that point. So, okay, what you will do at that time? So doctor, what they do? They put mark on your MRI data, that they mark it. This is the point where surgery is going to happen, not inside the thing. So your correspondence should be needed. Suppose you are looking straight and your MRI orientation is not straight. You are just different or aligned at 30 degree or 10 degree also. The surgery point marked inside the MRI and your head is different. Now if surgery will happen, definitely that is not the correct point and it will devastate. So at that time, alignment problem comes, and that the BRC is handling. And we have also developing the system that is so that the automatic alignment can be done. Okay. When the person came, if suppose mechanical guys know that when you
make a robot, okay, it has a mechanical limitation. It cannot reach everywhere. Okay, some parts are sweet spots. Some parts are not sweet spots. At that point, what you will do? Your one second. So your like your robot has a sweet spot. Like this can go by this way or other directions, but not some places. So you need to orient your patient first, so that reachability of the robot can be assured. Like robot can reach that place of surgery, and that too sweetly, not in a very that manner that cannot angle tilted, not like that. Very sweetly it can go. So at that point, we need to align the patient. When we are aligning the patient, we need to estimate the patient position from the couch. Like if patient is lying on the couch and the point where robot is mounted, the difference between the heights, how much different is that? Where XY orientation, where the actual patient head is there, the XY coordinates of that, that should be automatically, and that should be no error. I'm just telling that you cannot sustain a centimeter error also. That's the second part of challenge. Third part also, the robot should be so like if even if robot will be a small mechanical thing, that error, that rather than going 10 meters ahead, it is going 9.8 meters ahead. Again, it will destruct your healthy tissue rather than removing your actual the tuberous part or other things. So the challenges you will see, you can see the complexity of robot in the picture. You can see the complexity of software at that time. Now it is again in development stage. We are going for the clinical trials also for this project. But this is, you will see that BRC is not working only on reactors. They are working on a diverse areas. Okay, especially you can see that robot assisted neurosurgery where mechanical guys, computer science guys are working together, where there are even other fields are in Babatron. There are physics guys are there. There are some electronics guys are there. There are some computer science also. There are interdisciplinary work is going. So this is again a challenging problem where you can see that even we can even sustain the centimeter error also. So that's the thing I've just introduced because of how the challenging things happen. Okay, so moving ahead, I'll just show this video to you. A small video, but once again, I think some error is there. Leave it. That was actually something related to localization of fiducials. I'll be telling if time permits me. At the end, I will tell you. So some more things about healthcare. What the BRC is doing is the radiation sterilization of healthcare product. Okay, obviously we hit with the radiations so that the germs should not be there or other things should not be there. So sterilization is there. Radioisotopes for imaging. What imaging is and medical imaging. So the source should be produced so that the other imaging industries, medical imaging industries of India should like catered with their needs. And also there is a new innovation like they have developed in BARC like few years ago, that is blood irradiation with cesium pencils. And cesium is coming from waste. Okay, I'm just telling you that cesium is not we are producing from ourselves. We are wasting our money. We are producing no, from the nuclear waste we are getting the cesium, and from cesium we are doing the blood irradiation. That irradiated blood can be used for long days. Okay, so that part is also there. BRC is using that waste to for this purpose. So moving ahead, some security thing. So basically, I'll be dealing in this part. We'll be discussing about the network security and supercomputers and other things. So some of my domain things I have discussed till like other domain things, but now coming to this. So we are also working in conventional network security. Like we have a system called like secure network access system. Even if you plug a pen drive, we'll detect it that you are plugging from this device. We'll block it. Will not allow you to use a pen drive without registration. Even if you will plug that network cable from anywhere, I'll will be detecting on our interface and will be blocking you're using unauthorized access. We maintain it infrastructure. We monitor systems. We monitor malware so that because there's a safety critical applications are going on in BARC, if any information leaks out, that will be very difficult to manage it. And the government, definitely it's a failure of our organization if our sensitive information leaks out. So we have a conventional network security things. We monitor continuously. We have a firewall system, end-to-end event analytics. Even we monitor your applications inside your computer so that is there anything the signature matches with the any virus thing or malware thing. If something like that, block that system. Don't allow that system to enter in the BRC network because it will definitely harm other computers and other information.
that system we develop and we actually maintain it. And actually, we are trying to productionize it for the other industries also. So this is the thing. Next, we are working on high performance computing, visualization systems. We have private cloud infrastructure inside. Like you're using AWS, we also have our AWS in BARC. That is for our use cases. Okay, we get our virtual machines there. We run our system continuously. Suppose we have to deploy some web application, like some machine learning. Suppose I have developed something machine learning application. The inference server is deployed on our cloud server, so that 24 into 7 it should run. So that is actually working. So high performance computing, we are continuously working towards the petaflop class supercomputers. Okay, we are working, and we have also a petaflop class supercomputer. That's Anupam series of supercomputers. So that why we are developing it, because we cannot upload our data to AWS. We cannot share our experiment to AWS. Okay, so we need inside our monitored infrastructure. If we'll say the AWS to provide the nodes or the computing capacity, they will provide it, but they can monitor. Okay, the what the things are going on, but that we don't want. We don't want that data should leave our premises. So we have our own supercomputers that like people use it for multiple experiment. The queuing system is completely working, and that indigenously developed system. Okay, so that is working. We don't that's the thing, and you can get everything inside that cloud system and all. Okay, so something about the AI surveillance, because now AI systems are going on, and you everywhere you listen about that ML and deep learning. But again, believe me that what you are listening out these, like people have developed in half hour, they have developed that system and that's working fine. They don't work fine, I'm telling you. Okay, never, because in half an hour you cannot deploy any machine learning system. Okay, so what happens actually that whatever system you deploy in colleges or develop or train our model in colleges by seeing the Google or YouTube or the blogs for analytics with their medium, it's just for 80% accuracy or 70% accuracy, or may not work, like for the showing your professors that yeah it's working fine. For here we need 100% accuracy system. Okay, we cannot allow, suppose we have a number plate recognition system, we cannot say there's a 90% accuracy is there, 10% vehicle don't detect. What will happen? That 10% and vehicle had done everything inside the base. Then what? This time you're not in college, so we have to develop system that has an exact 100% accuracy. Otherwise, it will not work. You will not be allowed to deploy. You cannot use something which is connecting to internet. You have to develop everything in house. So first challenge is there. In AI system, I am telling you, even if I will tell you the simple problem of facial recognition, that system will fail for 80 for the 10% or 20% of the cases, because of lightning condition, because of the infrastructure, because of the timing, everything. You need a fast accuracy, like fast system. It should quickly recognize it, and it should be accurate also, and it should work in all environment also. That should be there. Like I want a number plate system, even if high amount of raining is there, the vehicle is coming, even if the evening is there, and then it should detect it. That accuracy I want. So that the our college level solutions of artificial intelligence never works in production system. I'm telling you. Even the explainability issue. We say about your model is working. Working in means what? It should be explainable also. How you say that? That it is detecting this image is a cat or dog when people say it. But how is saying cat or dog? There should be some explainability also. So ethical issues are there. So what we are working on the surveillance thing, that anomaly detection, obviously, that in network also, any anomalous behavior should not be there. You don't estimate it as a normal problem, I'm telling you, because they normally, even when I was in college, I also said, hey, everybody is working in anomaly detection, but they are working because the big problem. Everyday anomaly is coming. That machine learning system should not be trained for the other like previous attack. It should be trained for the 0 day attack. You should remember this word 0 day attack. You have to ready for the 0 day attack. If any threat is not investigated yet, you cannot say that there is no threat. You have not investigated, but it can happen on the 0 day today also. So your system should be ready for 0 day. There should be video analytics. There should be facial recognition. There's a premature technique. You know that it's already people are using facial recognition, but you know that most of the police organization in India nowadays they are working for the that I'll give a CCTV footage to detect that person is there or not. Using the CCTV location, they will reach at that point and they will
catch that criminal. So we are using facial recognition, but they want the accuracy. Okay, they, every time they are working, interacting with the companies, the IT startups, some IT startups are working in that. So they ask the accuracy. At least false positives chalega. Five false positives are okay, but there should be that in which some person is there, he should not miss it. At least missing should not happen. So behavior analysis is there, like analyzing the behavior of people. Okay, that is also a big challenge nowadays. Suppose in my BARC campus, some random person is moving here and there. What they will do in that? Like, we have to detect it that this person is doing something that we should not want to do. So that email security and other things. So AI surveillance as well. So again, there is a very few minutes left, so I'll be just glancing over things. So quantum, please, if could have got the time, could have discussed a bit more about the quantum future. That's a IBM super quantum computer. So after that, let's come to scrolling. Okay, so scrolling thing, just like we scroll in Instagram, I sometimes scroll on like Google and other things, Medium, and we get some news. So this is from Indian Express, the Skyroot plus ISRO. Why I'm telling this thing? Because even if you're not joining the ARC, ISRO, or I have been, I have appeared for ISRO DRDO. I have interacted with ISRO DRDO scientists. Okay, so but I haven't joined that place. That's a different thing. But I have interacted with them. So you don't think that you will join ISRO, then only you can work for the space sector. If you have real courage and you can say the real enthusiasm also, courage and enthusiasm both are required. Then you can be a startup like Skyroot. They are launching like SpaceX. So India's SpaceX kind of thing. Skyroot is doing. So be and that even I'm telling you the nuclear sector also. Recently, our Prime Minister has announced that we'll be introducing private partnership also in the sector. So, if you have interest, you can think about it, you can research, and you can make a company like Skyroot. So, my one of the friend is also working in not in Skyroot but in a space startup. They will be also joining the base. Second thing, just Neuralink. Just read it. A very nice thing, Neuralink. So controlling my PC, I am tapping now for changing the slide. But suppose my mind will tell you now change the slide, it should change the brain computer interface. Now what the people do, they actually attach a gear, headgear. From there they sense the signal and they pass in. So there will be lots of wire. If you see that you don't like it, you will tell that don't want that brain computer interface. The brain computer interface should be like the Robert Downey Jr. Iron Man. Okay, like he's saying something inside the mind and everything is going on. That's what Neuralink is going to do. What they are doing, they are putting some electrodes inside your brain. Okay, it will not be outside. It will be invasive, and for that they need robot-assisted neurosurgery. What I was linking at that point, because a human cannot place that precisely that a machine can place. So that's why a lot of research is going on in Neuralink. The Elon Musk team are working, and we believe that this certainly will be possible at some days. That a paralyzed man will be controlling the car, the autonomous systems, the lights, everything. He'll be talking, he'll be writing, everything he can do, even in the paralysis. That Neuralink will make it possible. That and that for Neuralink we need robot-assisted neurosurgery. You know. So again, DeepMind, AI-based algorithm development. Small introduction, just you. So for the computer science guys were reading in second year, I think I used to read in second year. So at that time, we need to design analysis of algorithm. So algorithms you have, you also know that Strasson's matrix multiplication algorithm is there, and now DeepMind has. I think I just heard maybe I can that Strasson, the complexity of Strasson's matrix multiplication algorithm has reduced by a AI-based algorithm. Means AI has designed a new algorithm which is not designed yet. Okay, so that you can see the advancements. It's very pretty complex. I will say that field is not matured at all. A lot of things are going on. Okay, so they are developing algorithms now. Or for the deterministic system, they have steps also. Big thing. Moving ahead with that Maze telescope, please go sometimes and see that is in Hanley, Leh and Ladakh. That we have a system for data archiving. This telescope data archiving, analysis, and storing. So we have a good telescope. That's a Maze telescope. So that we are working on. So now last time I'll be at the last I'll be quoting out that my success will not depend on what I or he thinks of me. That my success will be that make of my work. I followed this. I was also once I was selected in corporate also in the fourth year, but
Even I was selected in ISC Bangalore also. That time I chose Power Atomic Research Center in 2019 and joined this place. Okay, and after that I appeared for the TRD. So you are in a great stage of your life, first or second or third year, whatever. Please enjoy also. And that is my senior colleague used to tell me always that please enjoy also. Work for 8 hours only, but work nicely for 8 hours. And after the rest of the time is free for you. And that the Hui Ajay Baba, please watch Rocket guys. That's not I'm promoting, but you can watch it. It's nice series on Sony Leave. Okay, so that is the thing. Thanks. An atom in service, Abhilash Bhardwaj. Okay, so now I'll be taking up some questions, whatever time is left for me. Thank you. So, what an enlightening session and really inspiring the last quote. So, Thank the you. audience have put up a few questions. I'll just get them in a minute. Okay, one other question is there. Computer science graduate, what motivated you to take path for PRC instead of a path that most will take? Yeah, for me actually, I won't say that I want to serve my nation. That's why I have took that field. But actually wanted that multidisciplinary work areas are there in BARC. Okay, and second part of that is that I don't want. For me, after 8 hours, some hours is required for my reading. Okay, I want to study for myself. I want to do some creative works, which may I would have lacked in private sector. So there were two things were there for joining this organization. Yes, sir, that's totally correct. Uh, Let me get a few more questions that were asked during the session. I hope you guys are not much bored of this session. Maybe. That was really interesting, Thank you. about the interdisciplinary work. So if there is no questions, I'll be telling you just few minutes, 2 3 lines to you guys that work hard if you want to join. Just for the information, if you want to join the organization BRC, ISRO, DRDO, anything, you can. Okay, under research or use. Okay, no, it is under research. Still under research. There are some systems are there. Some private systems are there, but still it is not completely automatic. I will be telling you that's not completely automatic. People manual. You can say the manual intervention is still there. What do you feel the difference work culture in IT industrial sector and the science and research sector? What is better according to you? Okay. For me, right now I'm be telling that this sector I like it. Okay, but I will be telling you that people leave this place to go IT, and some of the IT guys also join there. There are things, but be this suppose you want to earn money, you won't earn that much money that you earn in your private sector. Obviously, if you work for suppose 10 hours, you're working, you're getting 24 lakhs of package, 36 lakhs of package, definitely. So you have priorities are different. What do you want to earn money or you want to like leave a work life balance. I suppose for me actually my time is my time is money. Okay, so for after 8.5 hours I want my time that I will study something. I'll not be doing that work I was doing in office, suppose. So that is for me it was important. I want to suppose I want to read the Hindi literature books at that time, so I can read at that time. So the diversity actually took me here. So how was your experience at Dell and BRC? Dell, it was nice. Yeah. Working experience on Dell also was good, and BRC also good. I work in a decent division, okay, with a decent people. They all are from IT mindset only, but nice experience there. Okay, so eagerly waiting for another such webinar covering. Okay, thank you. Definitely diverse fields. There are diverse field. So piece of information for you guys. Gate. Prepare for Gate if you want to join any of the organization. ISL, BRC, DRDO, and anything. Okay. So prepare for the Gate and work hard. If any type of guidance is required, you can communicate over LinkedIn or something. So you can talk to me. Okay, there is one question, sir. In today ever-changing world, whether where nothing seems constant, what are the fields with the now? Okay, so it depends upon which branch you are, Krishna. If you are in computer science, I think many fields are there. Many fields. In computer science, if I'll start with the big data, visualization, machine learning, already you know. I will say even programming also, yeah. Even programming industry is still not matured. People are a lot of job every day. People getting for 36 lakh, 40 lakhs. My friends are there.
My one of the friends joined Germany just after 2 years experience from LinkedIn. No recommendation, no referral, nothing. He joined for around he's getting 4 lakh per month there after deducting the tax. You can get the same experience what I am having. Means I also can go for that. No? He's working on big data and software engineering thing. So definitely a lot of career are there. So you choose your interest. Bit of interest is required. Otherwise, by some time you will be bored. That by pressure you join this place. Okay, that should not be happening. Sir, after how did you? I'm sorry, I'm still confused. Okay, we can discuss about that. Sir, how did you decide to study GATE and go forward with further instead of going for placement? I decided in my second year itself that I'll go with GATE. So that is the thing because at that time I realized that what my potential are there. It doesn't mean that I haven't prepared for placement. I was placed in Dell, so I got PPO. I left Dell and then joined. I was like see, I never neglected placements. I'm not kind of like I leave that placement and then I'll full fledgedly I'll work for Gate. Okay, that should not happen. You have a lot of time. Na? You can parallelly you can maintain it. Okay, so that don't worry. I have maintained many things. I'm telling you. I have been part of theaters. I have been part of the Nukkar Society. I've been part of that coding competitions and other things. Gate and placements also. You can do a lot of times and that time is there. Okay, so manage well. You'll enjoy the college. Okay. Uh, Thanks. How was your selection and training experience? Do I have time, Suhani? Should I answer the questions or I have over the time? No, sir, sure, you can answer. Okay, there are few questions left. How did you decide to study for GATE and go forward for you? That I have already answered. How was your after selection training experience? It was okay. BARC training experience for 1 year. It is for 1 year that hectic actually. 3 months are pretty hectic. You'll be studying that nuclear things and other things. So definite materials and all the things you'll be learning at that time. And there will be examination continuously after some break. So the training period is hectic. 1 year. After training, all good. You will be working for 8.5 years. Sorry, 8.5 hours, and there will be a good time inside campus. Just you will not be able to take your mobile cell phones inside. That will be a problem. Okay, so gate journey. Thank you, Jen. Okay, there will be gate journey. Gate journey, or I will telling. I have what I have done for my gate is like I'll be. I am when I was in second year when the next suppose design analysis of algorithms is there. People are teaching or teacher are teaching. At that time, I'm reading the gate syllabus also. So I haven't done anything different. But if you want to start even in the fourth year, at least take 8 month time, read well. In 8 months, you will be definitely do good. You can take coachings also if you want. If you are not able to read. That's one. Okay, I think That's helpful. Yes, sir. according to you, CSE will continue to rule or some branches EC. CSE is not ruling the world. First thing is they are earning money. That's the thing. This is not. They are not ruling the world. Okay. Being a CSE engineer also, I believe that still mechanical civil, they are also doing a lot of challenging work. Okay. What happened that there are the service sectors have grown a lot. Okay. Nowadays, like the world is dominating by services sector. That's why the CS guys are getting a lot of money. Few days back, you don't even like a few years back. I think never used to join CSE because like they used to choose core branches over the CSE. Time changed. Now services sector dominating. So that's the thing that's happening. Anything more? Okay, we can discuss over LinkedIn sometimes if you have more doubts. So thank you. I think taking much of time with the next speaker. Thank you, Suhani. Thank you everyone who joined this session. Thank you, sir. This has been a really inspiring and enlightening session. Now I'd like to hand over the virtual mic to my colleague Sanya for the further conduction. Thank you so much, Sohani. So, moving on with the conduction, it is rightly said that future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. So, our next speaker today is the quintessential entrepreneur defining this saying. She is not your everyday entrepreneur. Her journey is as remarkable as exciting. She is one of the youngest and the most inspiring women to own the consulting based startup named College Company.
College Khabri is an online platform that provides important career molding information about courses, colleges, and their placement, with the objective to assist students to pursue the course of their interest from the best colleges. Miss Arshi Khan, being a startup enthusiast and an entrepreneur, motivates and promotes the young generations to come up with innovative ideas by running a startup community. She is a TEDx and Josh Talk speaker. She also has a great interest in biking. So, hailing from Bhopal with entrepreneurship running in her blood, she was awarded Be the Women Speaker by the Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Sivraj Singh Chauhan, and has been featured in various newspaper articles. So, with a huge round of virtual applause, please welcome Ms. Arshi Khan, the founder of College Khabri. Yeah, hi. Am I audible to you? Good afternoon, Yes, ma'am, everyone. you're very much audible. Yes, Sanya. So, thank you so much for having me here. And I am just expecting to have a great session with the students watching this, live streaming. And will definitely try to help out as much entrepreneurs as I can, right? Because what I feel like, the right time to start startup is while you're pursuing your graduation, because you have these 4 years with, great and energetic minds, being with you. So, yeah, hoping for the same. Yes, ma'am. I just wanted to understand, do I need to start with the topic? What, we're going to discuss in this? Yes, ma'am. You can just start with whatever you have to tell the audience right now. We have people watching our session. Hmm. There are people greeting you in the comment section, so you're very much audible to them. Okay. So should I start or should I need to wait? No, ma'am, you can start. Okay, fine. Cool. So I think, the topic for this session is creating path, right? अगर हम इसको शुद्ध देसी भाषा में बात करें, तो रास्ते बनाना. अब ये रास्ते can be for your business, can be for your startup, can be for your placement, can be for your dream company, can be for anything, right? So creating your way, creating paths. लाइफ में होता क्या है, लाइक कई बार देर आर पीपल हु आर वेरी फोकस्ड कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, एंड देर आर सर्टन पीपल जिनको पता नहीं है उन्हें क्या करना है, बट दे आर जस्ट मूविंग विद द फ्लो कि हम अपने फ्यूचर के साथ, अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद माय जर्नी एंड किस तरीके से आप इस चीज से लेसन ले सकते हो, मैं उसी को स्टार्ट करूंगी. आई वाज 17-18 years old, and like all of you, I also wanted to complete my engineering after my 12th standard, and not from Bhopal specially. So I get into a college called VIT Vellore. The time I was just packing my bags ki, ab I'll be having my wings to fly. The destiny was the destiny has taken a U-turn कि भाई तुम्हें बाहर नहीं जाने को मिलेगा, तुम्हें यहीं भोपाल में रहना है. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे माय फादर was diagnosed because उनकी किडनी जो है वो खराब हो चुकी थी because of diabetes. So that point of time I decided कि पहले like let my father get healthy, and then I'll plan for my engineering. I'll go after a year I'll go for my engineering. बट वो 1 साल की ड्यूरेशन वॉज इतना टफ कि उनकी हेल्थ कंडीशंस जो हैं वो टाइम के साथ साथ खराब पे खराब पे खराब होते गए. एंड आई थिंक 1 साल बाद व्हेन आई ही पास्ड अवे, एंड वो सिचुएशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम की अर्शी की बात करूँ, तो मेरे माइंड में सिर्फ ये थॉट था कि मेरी तो लग चुकी है, बिकॉज कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में. एंड आई थिंक लॉट ऑफ स्टूडेंट जो इसको देख रहे होंगे, स्पेशली लड़कियां, वो इससे कोरिलेट कर पाएंगे कि हमारी लाइफ में हमारा जो पिलर्स होते हैं, घर में 4 पिलर्स होते हैं
किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए मेरे वो चारों पिलर्स मेरे फादर थे, एंड ही वाज वेरी सपोर्टिव टू मी ऑल द टाइम, जो भी मुझे अपनी लाइफ में करना था। बट जब वो एकदम टूट जाते हैं ना, तो यू बिकम ब्लैंक कि अब क्या करना है लाइफ में। तो उनकी डेथ के बाद थिंग्स वर वेरी क्रिटिकल, राइट। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आई वाज ब्लैंक। और वो जो डिसीजन मेरा था कि मुझे बाहर जाके अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है, वो पूरी तरह से ड्रॉप हो गई कि अब जो करना है यहीं भोपाल में रह के करना है, बिकॉज आई हैड माई ब्रदर एंड सिस्टर एंड माई मदर, जिनको मुझे पैरेलली उनके साथ रहना था और सपोर्ट करना था। तो 17-18 साल की एज, आई थिंक मैं भी मेच्योर नहीं थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि लाइक लेट्स ट्राई फॉर जॉब, जॉब करते हैं। पर क्वेश्चन यही कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 12th पास स्टूडेंट के लिए जॉब करना वाज आल्सो नॉट इजी, कि आपको कैसे जॉब मिलेगी, आपके पास जस्ट अपना 12th कंप्लीट है। और व्हेन यू गो टू कॉलेजेस, आई वेंट टू सो मेनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन भोपाल, देयर फीस वर वेरी हाई, राइट। और मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अफोर्ड करने की सिचुएशन में नहीं थे, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में कभी भी पैसे मांगे ना, तो इट वाज विद फ्रॉम माई फादर। एंड पापा के जाने के बाद एक होता है ना थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल आ जाना, कि आप देख रहे हो सिचुएशंस चेंज हो गए हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे या तो आप ये रखो अपनी फैमिली के साथ कि मेरा ये होना है, मेरा वो होना है, या फिर आप सिचुएशंस को एनालाइज करो और उसके हिसाब से डिसीजन लो। तो मैं ये डिसीजन ले चुकी थी कि वट एवर आई वॉन्ट टू डू इज ऑन माई ओन। मुझे खुद की ही दम पे जो करना है, भले वो मेरी एजुकेशन हो, भले वो कुछ भी हो, वो खुद करना है। तो व्हेन आई वेंट टू ऑल दोज इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आई वाज नॉट able to afford their fees. And parallelly then I started working with NGO कि मैं कुछ funds, because एक proper private company में job करने के लिए you need that proper education, कि मैं आप proper उस level पे काम कर पाओ। तो NGO में काम करते करते I think I remember I went to a library which is in New Market in Bhopal, and there I met one of my co-founder, right? He was my friend. His name is Rothar Jealous, and तो he said कि तुम तो you was about to go for your engineering, then how come here? So I told him कि ऐसी ऐसी situation है, and अभी like I'm just looking for colleges कि मैं कहाँ से अपनी engineering complete कर सकूँ, but funds की वजह से I'm not able to। तो he told me about this scheme called TFW scheme। I think बहुत सारे students aware होंगे जो engineering कर रहे हैं कि इंडिया में जितनी भी colleges हैं, right, जो All India Council Technical Education के अंदर आते हैं, उनकी 5 to 10% सीट्स जो हैं वो फ्री वेवर की कोटे में जाती है। इसके लिए कोई कैटेगरी बैरियर नहीं होता है, ना ओबीसी जनरल कैटेगरी वाला बच्चा, ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा, ओबीसी वाला बच्चा, हर बच्चा एलिजिबल होता है। ये प्योरली आपके इनकम सर्टिफिकेट के, आपकी फैमिली के इनकम सर्टिफिकेट एंड आपके परसेंटाइल के बेसिस पर डिपेंड करता है। तो व्हेन ही टोल्ड मी अबाउट दिस थिंग, आई वाज प्रीटी एक्साइटेड, राइट, कि ये तो काफी अच्छा है, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आई रियलाइज कि मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अपनी एजुकेशन करना चाहते हैं, पर दे डोंट हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो वी स्टार्टेड विद दिस ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे वी यूज्ड टू कॉल स्टूडेंट्स, वी नीड टू टेल देम अबाउट दी स्कॉलरशिप्स, कि कैसे वो उसको अवेल कर सकते हैं, उनकी हम प्रोसेस कराते थे। सो दैट वाज बैक देन, जहाँ पे वी वर जस्ट ट्राइंग टू सर्कुलेट ऑल दीज इंफॉर्मेशन इन भोपाल और नियर नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स लाइक विदिशा, सीहोर। हम वहाँ पर जाते थे, सेमिनार्स करते थे। तो पहला क्रिएटिंग पाथ ये कि एक सिचुएशन जहाँ पे आई वाज लाइक ब्लैंक, की सब चीज खत्म हो चुकी है लाइफ में, एंड उस सिचुएशन में मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब कुछ बचा ही नहीं है, राइट। अगर मैं भी वही नॉर्मल तरीके से सोचती, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, जितना मुझे पता है कुछ साल मैं घर पे रहती, देन मेरी फैमिली सोचती अब इसकी शादी कर देनी चाहिए एंड लाइफ का दी एंड हो जाता। पर सिंस माय चाइल्डहुड आई वाज लाइक वेरी जिद्दी काइंड ऑफ अ गर्ल, कि जो करना है वो करना है। एंड इससे पहले ये बिजनेस स्टार्ट करने का भी मेरे दिमाग में क्यों आया, कि मेरे फादर का बिजनेस था, एंड आफ्टर हिज डेथ आई वांटेड टू हैंडल इट, बट माय फैमिली वाज प्रीटी कंसर्न कि इतना सेफ नहीं है, एंड पीपल विल नॉट टेक इट इन अ गुड वे, कि इतने बुरे दिन आ गए कि लड़की को भेज रहे हैं संभालने के लिए। तो दे सेड कि हम तुमको तो नहीं अलाउ कर सकते हैं। एंड वो थॉट प्रोसेस की, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है। मेरा हमेशा से यही ड्रीम था कि मुझे अपना इंजीनियरिंग करना है, देन उसके बाद जॉब करना है। पर वो जो ट्रिगर पॉइंट है ना, कि मतलब मैं इसलिए नहीं कर सकती बिकॉज ये सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, या फिर मैं लड़की हूँ इसलिए नहीं हैंडल कर सकती। वो थॉट प्रोसेस मेड मी थिंक कि नहीं, मुझे खुद का कुछ करना है। आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन, and that was the first step, jahan pe we started this offline platform. We started circulating information among students, and I tried to create a path not only for myself
बट फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर, राइट, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज हैं जहां हमने बच्चों को देखा है कि उनकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में है, दे वर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर एजुकेशन, पर वो सिर्फ उस इंफॉर्मेशन, उस तरीके को जानने की वजह से वो अपना एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट कर पाए हैं, और अभी दे आर डूइंग गुड विद देयर लाइफ एंड ऑब्वियसली दे आर सपोर्टिंग देयर फैमिली। ये ये ऑफलाइन प्लेटफॉर्म था, पर मुझे कुछ बड़ा करना था, मुझे अपना कुछ नाम बनाना था। एंड सभी के मन में होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, आइदर इट इज विद अ गुड प्लेसमेंट और आइदर इट इज विद एनीथिंग वट एवर वी वांट टू अचीव, राइट, भले वो हम स्पोर्ट्स में बात करें, हम वो करियर में बात करें, भले हम वो एंटरप्रेन्योरशिप में बात करें। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई रिमेंबर, राइट, माय को-फाउंडर, फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, राइट, वांटेड टू हैव अ ऑफिस। मेरे टाइम पे हैव रेंटिंग ऑफिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज मैं खुद 18-19 साल की बच्ची, राइट, और व्हेन आई वेंट टू रेंट अ ऑफिस दे सेड कि हम तो नहीं दे सकते, आप पहले अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, बिकॉज हमें नहीं लगता कि आप रेंट पे कर पाओगे। तो वो तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वी फाउंड दैट स्पेस, तो वी सेड कि ठीक है, इनकी हेल्प करनी चाहिए, अगर ये भी अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं वी शुड हेल्प देम, सो वी विल काइंड ऑफ शेयरिंग दैट स्पेस विद देम, बिकॉज वो स्पेस काफी बड़ा था। एंड ये पूरा जर्नी 1 साल का हुआ एंड वी वर लाइक प्रीटी एक्साइटेड कि हमने काफी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की, एंड वी इवन जनरेटेड अ प्रीटी गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आल्सो आउट ऑफ इट। सो आई थॉट ऑफ कि लेट्स मूव टू द टियर 1 सिटीज, जहाँ पे हम देखें कि वहाँ पे ये स्टूडेंट सेक्शन कैसे काम करते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही हैं, राइट। तो ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए वी वेंट टू पुणे फॉर आई थिंक 2 and 2.5 months। When I came back to भोपाल कि अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हमने वहाँ पे कनेक्ट्स बनाए हैं, जो लोगों से डिस्कस किया है, ये इंडस्ट्री वहाँ पे कैसे वर्क करती है, दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिन फ्रेंड्स को वी शेयर दी स्पेस, राइट, सो दे टुक आवर ऑफिस बाय सेइंग कि ये तो परमानेंटली जा चुके हैं, राइट, एंड अब यू नो आप हमारे नाम पे ये कर दीजिए, बिकॉज वो तो परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस इज द सेकेंड पॉइंट जहां पे आई फील लाइक फिर से सब खत्म हो गया, बिकॉज आपने एक चीज स्टार्ट की और उसको एक लेवल तक आप लेके गए, एंड वो चीज फिर से बैक टू जीरो, बैक टू ग्राउंड, राइट। आई वॉज सिटिंग आउटसाइड माई ऑफिस बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू ओपन द लॉक एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग, राइट। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगा कि यार अब इसको छोड़ते हैं, जॉब ही देखते हैं, नहीं हो पाएगा, बट इट वॉज माई को फाउंडर हु सेड कि एक बार और कोशिश करते हैं, राइट। और यहाँ पे मैं एक और चीज ये ऐड करना चाहूंगी कि लाइफ में हैविंग राइट टीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज होता क्या है, जब हम एक बहुत लंबी जर्नी पे जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका मन नहीं करे क्विट करने का, बट जब दो लोग रहते हैं तो कई बार अगर आपका मन किया तो दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू कि नहीं नहीं एक और कोशिश करते हैं, और कई बार उनको लगा कि वी नीड टू क्विट, तो आप उनको मोटिवेट कर सकते हो कि नहीं यार एक और बार ट्राई करते हैं। तो वो सेकेंड ईयर था जहाँ पे हमने दोबारा से स्टार्ट किया एंड थिंग्स वर गोइंग गुड। बट जैसे कि आप कॉलेज खबरी की बात कर रहे हैं, कॉलेज खबरी इज अ कंटेंट प्लेटफॉर्म, अपने वेबसाइट है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस पे काफी सारा इन्वेस्टमेंट करके वी वर नॉट एबल टू गेट लॉट ऑफ आउटपुट्स, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं थे मार्केट में, एवरीबडी नोज शिक्षा, राइट। उसी हमारे स्टार्ट करने के कुछ टाइम बाद ही आई थिंक कॉलेज दुनिया स्टार्टेड, सो उनके पास एक बहुत बड़ा चंक था फंडिंग का, राइट, रीच बहुत ज्यादा अच्छी थी, और ऐसे में भोपाल जैसी लोकेशन में बैठ के compete करना was very difficult for us, right? So we were just thinking कि हम क्या करें, हम कैसे इसको इंडिया लेवल पे लेकर जाएं, कैसे इसको ग्रो करें। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जस्ट आई रिमेम्बर, राइट, हमने एक देयर इज दिस यूट्यूबर हु कॉल्ड अस कि हमें भोपाल में एक इवेंट करना है, राइट, एंड वी वांटेड यू टू ऑर्गेनाइज दैट इवेंट। सो एंटरप्रेन्योर्स के साथ क्या होता है ना कि जब भी कुछ भी नया लगता है यू ऑलवेज कि चलो ट्राई करते हैं, राइट। और यही एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ में कि कुछ भी मिले तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो किसी ने तुम्हें आइडिया दिया तो लेट्स ट्राई। तो वो इवेंट करके हमें रियलाइज हुआ कि दिस इज ऑल्सो अ डोमेन वेयर वी, उनका डोमेन ऑल टोटल अलग था, राइट। पर वहां से उस इवेंट करने के बाद वी रियलाइज कि हम भी वीडियोस में स्विच कर सकते हैं। दिस इज अ प्लेटफॉर्म एंड इट्स एन अनटैप्ड प्लेटफॉर्म। होता क्या है, वेन एवर वी क्रिएट कंटेंट, राइट, कंटेंट में क्या है, हमने इन्फॉर्मेशन ले ली, हमने देख लिया, एंड देन we don't have any connection, we don't have any heart attachments to that particular website or to that particular organization। पर जब हम वीडियोस देखते हैं और अगर हम किसी इंसान का वीडियो ऑन डेली बेसिस पे देख रहे हैं तो हमारे
अटैचमेंट राइट उस पर्सन से और उस ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है. तो वी स्टार्टेड अप विद अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्टूडेंट खबरी. आई थिंक राइट आफ्टर 2 to 3 years from the point we started working as an entrepreneur. एंड स्टूडेंट खबरी को स्टार्ट करते ही विद इन 1.5 years आई थिंक द रिस्पॉन्स वाज प्रिटी गुड राइट. पूरे इंडिया से जहाँ पे लाइक वी वर स्ट्रगलिंग कि हमें भोपाल से ही स्टूडेंट्स खुद रीच आउट करें या फिर विदिशा में हम खुद जा रहे हैं, सीहोर में हम खुद जा रहे हैं, हम सेमिनार्स कर रहे हैं, वहां पे हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे एक स्टूडियो में खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं एंड पीपल फ्रॉम अक्रॉस इंडिया calling us, asking queries, तो वो एक ऐसा पॉइंट था जहां पे चीजें एकदम ऑल टोटल जो है वो चेंज हो गई राइट. मैं इसमें एक एग्जांपल ऐड करना चाहूंगी दैट इज कि फॉर एग्जांपल आई थिंक हम जितनी भी ऑडियंस ये वीडियो को देख रही है वी ऑल आर बेस्ड इन भोपाल. मैंने डिसाइड किया मुझे इंदौर जाना है राइट. जब मुझे इंदौर जाना है तो क्या करोगे सानिया, आप क्या करोगे अगर आपने डिसाइड किया आपको इंदौर जाना है? लेट्स से आपके पास ना कार है ना मोटरसाइकिल है ना साइकिल है, वो विल डू? मैम अगर कोई भी कन्वेंस है ही नहीं तो मे बी आई विल नॉट इवन थिंक ऑफ गोइंग एट दैट प्लेस इफ इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट. Yes, that is the major problem with everyone, right? हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं तो हम ये कैसे करेंगे राइट. और यहाँ पे एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि वो सोचता है चलो पैदल चलता हूँ राइट, थोड़ा टाइम लगेगा बट एटलीस्ट मैं पहुंचूंगा तो. पर वो जो दो तरह के लोग हैं ना, एक जिसने सोचा कि चलो मैं पैदल चलता हूँ और एक वो जो सोचा कि ऑप्शन ही नहीं है तो हम नहीं कहीं चलते हैं, वो 2 साल 3 साल बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाएगा क्योंकि उसने उस तरह से सोचा ही नहीं राइट. बट वो जो पहला इंसान है जिसने सोचा कि मैं पैदल चलता हूँ, उसको हो सकता है रास्ते में कोई लिफ्ट देने वाला मिल जाए राइट. और अगर सानिया जैसी कोई ब्यूटीफुल लड़की है तो कोई हो सकता है कार से भी लिफ्ट देने वाला मिल जाए राइट. So that what exactly how happens, right? कि अगर आप इनिशिएट नहीं लोगे अपनी लाइफ में तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाओगे राइट. यू हैव टू थिंक चलो एटलीस्ट इनिशिएट करते हैं राइट. आई मीन आई थिंक बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे और इंजीनियर्स इस टर्म को बहुत अच्छे से समझते होंगे, दैट इज कॉल्ड जुगाड़ राइट. तो हमें लेट्स से हम कैंपस में रह रहे हैं और हमारा टाइम है 9 बजे का और हमें लेट्स से 9 बजे के बाद किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है तो वी काइंड ऑफ फाइंड अ वे, जुगाड़ हम निकाल लेते हैं राइट. या फिर हमें कोई क्लास बंक करनी है राइट, तो हम हर जगह दिमाग चलाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि अच्छा ये तो अलाउड ही नहीं है, ये तो रूल्स बुक में है ही नहीं राइट. तो दैट इज वेयर वी फाइंड अ सोल्यूशन. तो इस सिचुएशन में भी यही सेम चीज है कि आपकी लाइफ में आप पाथ तभी क्रिएट कर सकते हो जब रास्ते हर जगह हैं. हर आई मीन आई थिंक अभी का टाइम ऐसा है जहाँ पे एनीबडी कैन बिकम एंटरप्रेन्योर, एनीबडी कैन बिकम सक्सेसफुल. देयर वाज अ टाइम जहाँ पे आपको ऑडियंस को रीच करना, लोगों को रीच करना बहुत डिफिकल्ट था. बट अभी द टाइम इज जहाँ पे आप यूट्यूब देखो, आप इंस्टाग्राम देखो, आप गूगल एडवर्ड्स देखो, creators are there right. and उन्होंने 1 साल पहले स्टार्ट किया है and they are earning, they are doing good with their domain. तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है. इट इज जस्ट दैट आप उसको कैपिटलाइज कैसे कर रहे हो, आप उसको इनिशिएट कैसे कर रहे हो. मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक वीडियो आई थिंक मैंने कुछ दिन पहले देखी थी एंड आई सॉ दैट गर्ल जो कि मुंबई में धारावी में रहती है, वो 12 साल की है राइट. और वो मेरे फीड में आई एंड आई वाज लाइक कि लेट्स हैव अ लुक, बिकॉज उसने जो थंबनेल डाल रखा था वो धारावी का डाल रखा था. तो शी इज जस्ट 12 ईयर किड जो कि अपने 10-11 साल के भाई के साथ वीडियो बना रही है. और शी शोड कि वो कहाँ रहती थी धारावी में, मतलब एक कमरा जिसमें आई थिंक मैं क्या आप भी कभी नहीं सोचोगे कि मैं यहाँ पे रह भी सकता हूँ. वो एक 12 साल की लड़की जस्ट बाय क्रिएटिंग वीडियोस, बाय क्रिएटिंग कंटेंट कहीं से कहीं पहुंच गई. दे हैव मूव टू अ ऑल टोटल डिफरेंट प्लेस विद देयर फैमिली राइट. सो टाइम हैज चेंज टोटली. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हेन वी स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन engineering related counseling, scholarship, right? मैं इसमें एक और इंसिडेंट ऐड करूंगी. आई थिंक आई कैन नॉट रिकॉल द नेम ऑफ द स्टूडेंट. एक स्टूडेंट है, ही अप्लाइड फॉर जोसा काउंसलिंग. आप सभी एनआईटीज में या फिर ट्रिपल आईटीज में जोसा के थ्रू जाते हो. उसकी रैंक काफी अच्छी थी. आई थिंक उस साल उसने एमपी में टॉप किया था. तो उसको कोई एनआईटी मिला बट ही डोंट वांट टू गेट इनटू दैट एनआईटी. तो उसने क्या सोचा कि मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करता हूँ राइट, क्योंकि मुझे ये सीट तो पसंद नहीं आ रही और मेरी रैंक तो अच्छी है तो मुझे इससे बेटर मिल जाएगा. जब वो सेकंड राउंड के लिए लॉग इन करता है तो वो पूरी काउंसलिंग से बाहर हो गया था.
अब ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हर जगह अवेलेबल है, उनकी वेबसाइट पे, जोसा की वेबसाइट पे अवेलेबल है। पर आप इमेजिन नहीं करोगे, सिर्फ उस दिन कम से कम 5 से 6,000 कॉल्स हमारे नंबर पे लैंड किए थे, बिकॉज़ बच्चों को पता ही नहीं था कि अगर आपको कोई एनआईटी मिल जाए और आपको वो नहीं चाहिए, तो आपको नियरेस्ट एनआईटी जाके रिपोर्ट करना है। So this piece of information, what we were trying to circulate to the audience, have changed everything, right? अगर मैं अभी currently बात करूँ तो we have almost more than 10 YouTube channels, right? We have channel with the name of Student Khabri, जिस channel पे मैं videos बनाती हूँ, that is MBA with Arshi. We have channel called Need Student Khabri Abroad, and हम almost 80 से 90 लाख students हर महीने touch करते हैं in terms of videos, and it's not a small number, right? मैंने अपनी लाइफ में सिचुएशंस देखी हैं अभी जस्ट बिफोर कोविड, राइट, जहाँ पे वी वर लाइक 10 तारीख को सैलरी जानी है एंड 9 को यू आर ब्लैंक, राइट, कि आप कैसे फंड्स पे करोगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। यू नो, एक नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा, यार कुछ नहीं कर सकते, बंद कर देना चाहिए। और एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में थॉट प्रोसेस ये आता है कि अब क्या करना है, कैसे करना है, हाउ, राइट। So it is basically the toughest situation in your life which create paths for yourself, right? अगर आप सोचो कि लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड है, सब अच्छा है एंड एवरीथिंग विल बी लाइक स्मूथ एंड आप सक्सेसफुल बन जाओगे, आप 1 करोड़ का पैकेज उठा लोगे एंड देन आप अपना खुद का स्टार्टअप करोगे, आप इंजीनियरिंग करने के बाद IIM अहमदाबाद में जाओगे एंड देन, तो हमें दिखने में वो बहुत ईजी लग रहा है, राइट, बट जो पर्सन वहां पे बैठा है, ही और शी नोज हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर हिम। बट सिर्फ वो एक थॉट प्रोसेस कैसे होगा, अगर वो ये सोच लेता कि तो मेरे बस का ही नहीं है, इट्स आउट ऑफ माय औकात, इट्स आउट ऑफ माय कैपेबिलिटीज, तो वो वहां पे नहीं बैठ होगा। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक सिचुएशन है कि हर बार जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम इसलिए आती है कि वो आपको एक लेवल से, या तो अगर आपका माइंडसेट अलग है तो वो आपको और नीचे ले जाएगी, आप जमीन पे गिर जाओगे, आप फर्श पे आ जाओगे। बट अगर आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, आप एनालाइज करोगे कि अब क्या, अपने माइंड पे वो सोचोगे, तो आप ऊपर जाओगे, हर बार हर प्रॉब्लम में ऊपर जाओगे। एंड I'm telling you my journey, right? कि आज से 2 साल पहले भी, my family used to say, what are you earning from your startup, right? कर क्या रहे हो, मतलब 10 बजे घर आते हो, 11 बजे घर आते हो, एंड इतने साल हो गए, 5-6 साल हो गए, यू आर नॉट एबल टू अपनी अपनी एक्सपेंसेस भी नहीं निकाल पा रहे हो। और आज टाइम इतना चेंज हो गया है वेयर एवरीबडी इंस्पायर्ड कि यार अर्शी जैसा करना है, इन माई फैमिली ऑल्सो। तो वो टाइम चेंज होने में देर इज नो फिक्स्ड ईयर्स, राइट। जकरबर्ग ने 18-19 साल की एज में किया है, राइट, और KFC वाले ने 65 की एज में किया है, राइट। तो किसी के लिए हो सकता है सक्सेस 4 साल में मिल जाए, किसी को 1 साल में मिल जाए, किसी को 60 साल में मिले, राइट, बिकॉज सबकी अपनी लर्निंग है, सबके अपने तरीके हैं चीज़ों को करने के। हम कितनी ही बुक्स पढ़ लें, हम कितनी ही सक्सेस स्टोरीज पढ़ लें, बट अगर आप सोचो कि उनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ के आप सक्सेसफुल बन सकते हो, तो आई थिंक बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं, हाउ टू बिकम बिलियनियर्स, आई थिंक, पर सेम वैसा वो रेप्लिकेट नहीं कर पाते, बिकॉज यू हैव योर ओन journey, you have your own learnings, you have your own struggles, you have your own failures, and you have to learn from your failures and then take a next step ki what you have to do in your life, right? So it's just that it's same example मैं रिपीट करूंगी कि आप वो भोपाल से इंदौर निकले हो, राइट, आपको 2 महीने भी लग सकते हैं अगर आपको कोई लिफ्ट देने वाला नहीं रहा, राइट, आपको 3 घंटे भी लग सकते हैं अगर आप वॉल्वो पकड़ के जाते हो, राइट, और आपको 3 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास क्या कन्वीनियंस है, उसके हिसाब से चीजें वेरी करती हैं, राइट। बट अगर आप वो स्टेप नहीं लोगे, राइट, तो वो रास्ता कभी क्रिएट लाइफ में नहीं हो पाएगा। You have to start from somewhere, right? And trust me on this, I am pure example. I never wanted to become entrepreneur, right? जो पैसे कमाने के बाद मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के BBA किया, बिकॉज इंजीनियरिंग करने के लिए उतना आई रिमेम्बर मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया था भोपाल में, एंड मैं बहुत ज्यादा बिजी थी अपने काम में। तो एक पेपर में तो मैं लिटरली गाने लिखकर आई थी, एंड आई वाज लाइक, मुझे लिटरली रोना आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ, मुझे इंजीनियरिंग करना था अपनी लाइफ में, एंड व्हाट आई एम राइटिंग इन द एग्जाम पेपर। एंड जिस पेपर में मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा था, मुझे याद है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो पेपर वाज लाइक, उसमें मेरा बैक लग गया। एंड जो पहला पेपर था जिसमें मैं गाने लिख कर आई थी, मतलब आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन दैट, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग।
एंड जब तीसरा पेपर मैं देने गई तो मैं आई थिंक उस कॉलेज के गेट पे खड़ी हूँ, एंड आई वाज फीलिंग कि ये मैं बहुत जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि जो मैं अपनी एजुकेशन के साथ कर रही हूँ। मुझे इंजीनियरिंग इसलिए नहीं करना था कि मैं गाने लिख कर आऊँ पेपर में, एंड उसका रीजन ये नहीं था कि मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, बट उस सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंसलिंग चल रही थी, आई वाज क्रिएटिंग वीडियोस, आई वाज टोटली इंडल्ज इन माय वर्क। तो आई डिसाइडेड कि आई ड्रॉप माय इंजीनियरिंग, राइट। मैं ये नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट जस्टिफाइंग व्हाट आई एम डूइंग, राइट। तो उसको ड्रॉप करके आई कंप्लीटेड माय बीबीए, राइट। पर व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज कि life is a roller coaster ride, and every single situation in life, right, is an opportunity for you where you can create path for yourself, and not only for yourself. I am just telling you, मेरी टीम में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी फैमिली को वो रन करती हैं, दे आर बेसिकली द ब्रेड एंड बटर ऑफ द फैमिली। तो मैंने सिर्फ अपनी लाइफ नहीं क्रिएट की, राइट, बट मेरे साथ साथ जो मेरी टीम में लोग काम कर रहे हैं, राइट, जो अपनी फैमिली रन कर रहे हैं, उनकी भी लाइफ क्रिएट करने की कोशिश की विद द सेम प्लेटफॉर्म, राइट। सो बहुत ज्यादा अगर मैं अपनी स्टोरी पे जाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट, आई थिंक I've explained you pretty much everything which is very important in life is just go and walk, right? Wherever you want to. It's not only about being an entrepreneur, it's about whatever you want to do in your life. You want to be a singer, you want to be a dancer, you want to be a choreographer, you want to be a cinematographer, you want to be an entrepreneur. It's just that you need to initiate. And the time I started, that point of time, it was very difficult, right? मैंने बाइक चलाना भी इसीलिए सीखा बिकॉज आई वाज टोल्ड कि भाई ये लड़कियां नहीं चलाती हैं, एंड टुडे व्हेन आई राइड आई लुक, I see charm in, I see spark in women eyes कि यार ये कर सकती हूँ तो मैं भी कर सकती हूँ, राइट। मैं एक फीमेल बाइकर्स ग्रुप रन करती हूँ भोपाल में, विच इज फर्स्ट बाइक फीमेल बाइकर्स ग्रुप ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। तो लाइफ में जब भी कोई आपसे ये बोल रहा है ना कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो आप उसको जवाब मत दो, यार तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अपने काम से प्रूव करो दैट नहीं यार, यू आर कैपेबल फॉर डूइंग दिस, राइट। सब चेंज हो जाता है और आप सोचो कि मैं कुछ कर रहा हूँ विच इज आउट ऑफ द बॉक्स एंड एवरीबडी विल कम एंड सपोर्ट। सी दे आर, उनकी जो अपब्रिंगिंग है, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, पर वो जिस सोसाइटी में रहे हैं वहाँ पे उनको डेली बेसिस पे सिखाया ही यही गया है कि बच्चे को अपना ग्रेजुएशन करना है, लड़की है तो फिर शादी करनी है, लड़का है तो यार जॉब देखेगा, अपना करियर सेटल करेगा, फैमिली को देखेगा। तो बचपन से फीड किया गया है, राइट। दो सबसे अच्छे करियर्स कौन से होते हैं, इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, बिकॉज सेफ, सैलरी अच्छी है, पैकेजेस अच्छे हैं। तो हम कभी भी दूसरी जगह, राइट, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। अभी मैं परसों आई थिंक आरजीपीवी भी गई थी, तो बच्चे यार मुझे जाना था एनआईटी, मुझे जाना था आईआईटी, मुझे आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन चाहिए था बिकॉज वहाँ का पैकेज जो है वो 12 लाख 15 लाख का है। अब आप नहीं जा पाया आईआईटी, आप नहीं जा पाए एनआईटी, अब जो आपके पास है वहां से भी आप करोड़ों का पैकेज उठा सकते हो और करोड़ों रुपए कमा सकते हो। मैं कमा रही हूँ, मैं कभी नहीं, हो सकता है मैं अगर इंजीनियरिंग करती और द मनी व्हाट आई एम अर्निंग टुडे मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होता, मैं 10 साल में अपना पैकेज उतना नहीं कर पाती 10 साल काम करने के बाद। पर शुरू में मुझे भी डिफिकल्ट लग रहा था एंड मुझे भी डिफिकल्ट लग रहा था और मेरे आसपास जो लोग थे उनको ये लग रहा था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पर जस्ट वो थॉट लेकर आना कि नहीं यार चलो पैदल चलते हैं, लेट्स स्टार्ट, राइट, देखते हैं कैसा। तो अभी जब मैं अपने आप को डाउन द लाइन पीछे टर्न करके देखती हूँ कि अर्शी जो शी वाज, मैं यूजुअली जब मेरे फादर की बात आती थी तो मैं हर वीडियो में रोई हूँ। आई थिंक इससे पहले भी मैंने जो इंटरव्यूज दिए हैं कहीं पे भी, whenever it is about my father I used to start crying, but today when I look at that, तो आई रियलाइज कि हो सकता है ऊपर वाले ने वो चीज सही की, क्योंकि मैं अगर वैसा सिचुएशन नहीं आता तो मैं इतनी मेच्योर नहीं बनती, राइट। मैं अपनी फैमिली को इतना कंसर्न नहीं होती, मैं उनको उतना समझती नहीं, राइट। मैं ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट कर पाती जो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा है, सिर्फ उनकी एजुकेशन के लिए नहीं, कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती। तो एवरीथिंग हैज टू एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आप बुरा देखोगे तो फिर आप अच्छे के लिए मूवी नहीं कर सकते हो, और अगर आप अच्छा देखने की कोशिश करोगे तो यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज जिस पे आप काम करके अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांट टू से।
And yeah, over to you, Sanya. Yes, Bab, I definitely agree that it's all about opportunities and patience. Like you have to have that enough patience to walk down that path, and whichever obstacles you face, you just have to have patience to be able to combat those difficulties and move ahead. So Yeah. thank you, ma'am, for such an enlightening session. Really, like it was a wave of enthusiasm which ran through all our minds after listening to your inspirational words. And we really understand how a person, has to persevere in order to achieve their goals. So now I can see many questions coming up in the comment section. So we'll just highlight few questions for you so that you can answer them. Okay. Just a second, ma'am. Okay, I just have this question from Anmol Singh, and she says, knowing what you know now, is there anything you would have done differently when you first started out? Yes. Aman, सी अमन व्हाट अगर मैं अभी अपनी जर्नी देखूं, राइट, तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैंने की हैं उस जर्नी में, राइट, जिसको मुझे लगता है मैं इम्प्रूव करती तो जो टाइम हमें लगा वो और, बिकॉज जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने स्टार्ट किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उतना स्टार्टअप क्रेज नहीं था, राइट। अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हु आर देयर टू कम्पीट विद यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइंडिंग राइट मेंटोर्स, राइट, सेकंड चीज फाइंडिंग राइट टीम, ठीक है, एंड तीसरी चीज टेक्नोलॉजी इन बिल्ड प्लेटफॉर्म बनाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये चीज मुझे फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे पता होती तो हम जहाँ पे हैं वो और कम टाइम पे पहुंच चुके होते। दिस इज व्हाट आई फील लाइक। All right, ma'am, that was a great piece of information. So, coming to the next question. Okay, here. Usually, students strive for a degree. So, what gave you the confidence that you will overcome the risks you were taking by dropping out of your college and implement it? सी आई मीन आई थिंक ये विदित पुरोहित का क्वेश्चन है। विदित, इफ यू वाचिंग दिस आंसर, राइट, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती दैट यू हैव टू ड्रॉप योर एजुकेशन, राइट। मैं खुद भी अपनी एजुकेशन ड्रॉप नहीं करना चाहती थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड दैट इज द रीजन आफ्टर ड्रॉपिंग माय एजुकेशन आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एटलीस्ट, राइट। बिकॉज मेरे लिए वो सिचुएशन थी, मुझे लगता है ये जो 4 साल या 3 साल ग्रेजुएशन का किसी भी स्टूडेंट के लिए होता है, ये एक ऐसा फेज है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है, राइट। इट्स जस्ट दैट कि इंडिया में जितनी भी इंस्टीट्यूट है वो फर्स्ट ईयर से एंटरप्रेन्योरशिप उतनी प्रमोट नहीं करते हैं, वरना बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर ओन वेंचर अगर आप करना चाहते हो वो आपका इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर होता है, राइट। बिकॉज इंजीनियर्स आर मेड टू बी एंटरप्रेन्योर्स, राइट। उनके जो स्किल सेट होते हैं वो काफी सिमिलर होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में रिक्वायर्ड हैं। तो आपके पास एक टीम है जो आपके लिए फ्री में काम कर सकती है, बिकॉज आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो आप जैसे जुगाड़ू हैं, आप डिफरेंट चीजों के लिए रख सकते हो। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अपनी एजुकेशन ड्रॉप करनी चाहिए। मेरे साथ सिचुएशन ऐसी हुई थी कि माय फादर पास्ड अवे एंड आई डोंट, मेरे पास उस टाइम पे ऑप्शन नहीं था, बिकॉज मुझे अपनी फैमिली को भी देखना था, मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना था, तो दैट वाज नॉट एन ऑप्शन। तो उस टाइम पे तो अगर मैं बोलूँ तो वो मजबूरी थी, और कई बार क्या होता है ना, मजबूरी जो है लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें करा जाती है। So that what my answer is. All right, thank you, ma'am. Let's move on to the next question. It will be highlighted soon on the screen. Okay, Yeah. here is the next question. Shelly का question है, since the market is very volatile right now and the startups are in losses, what according to you can be a good idea to remain afloat in such situation? शैली, इसका अगेन बहुत अच्छा आइडिया दूंगी। जो स्टार्टअप्स लॉसेस में है उनका रीजन क्या है कि यूजुअली क्या होता है, अभी वी ऑलवेज से दैट स्टार्टअप एक बबल बन चुका है, हम
there was a time nobody know what entrepreneurship means, right? And what startup means, right? But अभी हम देखते हैं, हम जितनी भी बहुत ज्यादा फंडेड कंपनीज हैं, हम सोचते हैं हमें भी वैसा बनना है, पर वो कंपनीज अगर हम देखें तो अभी भी लॉसेस में। तो उसका रीजन क्या होता है कि हम फंडिंग पे बहुत ज्यादा भागते हैं। जब भी हमारे माइंड में आइडिया आया, वी ऑलवेज थिंक कि वी जस्ट नीड टू गो एंड इनिशिएट फंडिंग, राइट? फंडिंग मिल जाएगी, हमारा स्टार्टअप चलने लगेगा, और फंडिंग मिल जाएगी, स्टार्टअप और चलने लगेगा, और फंडिंग मिल जाएगी, देन हम प्रॉफिट बनाने लगेंगे। ऐसा नहीं है। जो मेरा थॉट प्रोसेस है, राइट, वी नेवर रन टू फंडिंग, राइट, फॉर आवर स्टार्टअप। मुझे याद है मैंने जब पहले इन्वेस्टर को पिच किया था, तो ही सेड मी दिस वन लाइन जो मुझे अभी तक याद है कि देखो, सिंपल सी चीज है, वो टाइम गया जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आइडिया पे फंडिंग करते हैं, वो बहुत कम बचे हैं। अगर आपका स्टार्टअप आपका खुद का पेट नहीं भर सकता, तो उसमें कोई भी पैसा लगा के प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकता, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जिन्होंने विदाउट फंडिंग, आई मीन दे आर डूइंग गुड, राइट? मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हम चाय की बात करें। पूरे इंडिया में पीपल आर लाइक सो फॉन्ड ऑफ टी। का किसी ने सोचा था वो तो मार्केट में चाय इज समथिंग जो कि सालों से है। वी माइट कैन से 100 साल से लोग चाय बेच रहे हैं, बट देर आर कंपनीज, और एक कंपनी नहीं, कई सारी कंपनी, भले वो हम चाय सुट्टा बार की बात करें या एमबीए चाय वाला की बात करें या टी पॉइंट की बात करें, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सेम डोमेन में, राइट, सिर्फ कुछ चीजें अलग करके अपने वेंचर स्टार्ट किए, और सिर्फ नेशनली ही नहीं, इंटरनेशनली दे सर्विंग द ब्रांड्स, राइट? सो जो मैटर करता है आइडिया, आइडिया आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट? हर जगह पे अपॉर्चुनिटी, और इट इज नॉट ओनली अबाउट कि यार ये वाला आइडिया जो है वो तो मार्केट में बहुत ज्यादा है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट खबरी की बात करूं, या फिर मैं अगर हमारी बात करूं, तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या जो काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैंने खुद ही अपने कॉम्पिटिटर्स के नाम आपको बताए, शिक्षा है, कॉलेज दुनिया है, बट व्हाट वी फोकस्ड इज कि वो सभी कंटेंट प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको कंटेंट की जगह वीडियो फॉर्मेट में लेकर आना चाहिए। और जब हम वीडियो फॉर्मेट में हमने टर्न किया तो सारी चीजें चेंज हो गई, राइट? तो हर मार्केट में बहुत सारा स्पेस है, बस आपको वो आइडेंटिफाई करना है, और कुछ सालों तक फंडिंग के पीछे नहीं भागना है, बूटस्ट्रैप करना है, उससे रेवेन्यू जनरेट करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि वो लॉसेस में ये नहीं होगा। वो कंपनीज लॉसेस में है जिन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट ले लिया है, दे आर जस्ट इन्वेस्टिंग, और उनका फोकस ही यही है कि हमें पैसा लेकर आना है, इसकी वैल्यूएशन बढ़ानी है। So that's what my answer. I hope that satisfied. Thank you, ma'am, for those valuable words. So just let me see if we have any more questions. Okay, here it is. How do you boost yourself when you feel low and despaired, ma'am? मैं अपनी गाड़ी की चाबी उठाती हूँ और कलरा से उद्यान चली जाती हूँ फिर बाइक राइड, एंड आई थिंक दैट इज द ओनली वे टू बूस्ट माई सेल्फ, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे लगता है कि मैं उड़ रही हूँ। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो आई थिंक दैट इज द ओनली वे। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी हॉबी हो सकती है, किसी को गाना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को, तो आप अपनी उस हॉबी को, राइट, ऐसे सिचुएशंस के लिए रख सकते हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार अब उतना वाइब नहीं आ रहा, उतनी फीलिंग नहीं आ रही, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो आई थिंक देन यू कैन सिंपली यूज योर हॉबी, एंड जब आप वो चीज करते हो जो आपको बहुत पसंद है ना, तो आपका माइंड जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जिस तरह के गाने सुनते हैं, हमारा मूड वैसा हो जाता है, राइट? हम सैड सुनेंगे तो हम सैड हो जाएंगे, हम सैड चीजें सोचने लगेंगे। हम पार्टी सॉन्ग सुनते हैं तो हमें पार्टी करने का मन करता है। उसी तरह से आप वो चीजें करोगे जो आपको अच्छा फील कराती हैं, तो आपका माइंड जो है वो उस तरह से काम करेगा, एंड जब आप दोबारा वापस आके अपना काम स्टार्ट करोगे तो यू विल बी विद द सेम एनर्जी एंड वाइब। So let me see if we have any more questions. Okay, there's one very interesting question. Okay, what kind of bikes do you prefer and what collection do you have? I love sports bike, right?
मेरा ड्रीम है कि मेरा जो घर हो, राइट, उसमें बेसमेंट में मेरे पास हर तरह की बाइक्स का कलेक्शन हो। बट अगर मैं अभी बात करूँ तो मेरे पास 2 बाइक्स हैं। आई हैव पल्सर 200 एंड आई हैव R15 एज ऑफ नाउ, and soon about to purchase this KTM as well. Okay, that's cool. Okay, what is the best takeaway advice you have ever got till now? See, अभी तक की बेस्ट एडवाइस जो मुझे लाइफ में मिली है इज, जो मुझे किसी ने दी नहीं है, पर ये मैंने अपनी 6-7 साल 8 साल की जर्नी में सीखा है। जस्ट बी कंसिस्टेंट, राइट? ट्रस्ट मी ऑन दिस, देयर वर मोमेंट्स जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यार मैं मेरे बस की नहीं है, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग। सो आई यूज्ड टू क्लोज माय आईज एंड थिंक कि मैंने ये स्टार्ट क्यों किया था, राइट? हम एक there's this book called स्टार्ट विद व्हाई। आपका व्हाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर आप अपनी लाइफ में लेट्स से ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। अगर आपका व्हाई बहुत स्ट्रांग है तो लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, राइट, आप कभी उसको क्विट नहीं करते हो। और जो दूसरी एडवाइस मैं देना चाहूंगी, राइट, ये लॉट ऑफ पीपल से कि आपके पास बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। और मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो पैरेलली जॉब भी करते हैं, स्टार्टअप भी करते हैं, और राइट, तो कभी भी आप दो नाव में सवार होके अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। जब आपके पास बैकअप ऑप्शन रहता है तो आपका माइंड हमेशा इसी तरह से काम करेगा कि चलो यार ये नहीं चला तो ये तो है ही, राइट। बट मेरी लाइफ में मैंने कभी भी कोई बैकअप ऑप्शन सोचा ही नहीं है। मैंने ये सोचा है कि मुझे अगर करना है सिर्फ और सिर्फ यही करना है, राइट। एंड दैट इज द रीजन मुझे लगता है आई एम हियर। अगर कोई बैकअप ऑप्शन होता तो हो सकता है बीच में जब मैंने स्टार्ट किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 30-40 कंपनीज थी स्टार्टअप्स थे, बट आज उनमें से भोपाल में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। हार्डली 1-2 ही स्टार्टअप हैं जो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। और उसका रीजन यही है कि उनकी लाइफ में बैकअप ऑप्शन थे, नहीं हुआ तो जॉब कर ली, ये नहीं हुआ तो आइदर इट इज जॉब, आइदर इट इज एनीथिंग, यू शुड हैव वन ऑप्शन। No option. Okay, I have one more question. What or who has been your greatest inspiration? Greatest inspiration. See, I mean, there are so many people who have role model, but what I feel like, मेरी लाइफ में मैंने कभी किसी को रोल मॉडल इसलिए भी नहीं बनाया कि होता क्या है, हम रोल मॉडल्स के हिसाब से उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, और जब हम उनके हिसाब से चलते हैं तो हम अपनी खुद की जर्नी, खुद के रास्ते नहीं बना पाते हैं। तो माई यू नो मेरा जो मोटिवेशन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यही रहा है कि मुझे याद है व्हेन माय फादर वाज अलाइव, राइट, तो मेरी माँ मैं जब पैदा हुई थी तो शी वाज लाइक कि वो बहुत डर गई थी क्योंकि मैं दूसरी लड़की थी। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देयर वाज लाइक अ सिचुएशन जहाँ पे थोड़ा सा लड़कों को ज्यादा वेट प्रेफरेंस दी जाती थी, एंड इट वाज माय फादर, ही ऑलवेज सेड व्हेनेवर मम्मी सेज कि दो बेटे हैं, इनकी शादी होनी है, कैसे क्या होगा एंड ऑल दिस थिंग। तो ये सब कौन कहता है दो बेटी हैं, 3-3 बेटे हैं मेरे, तुम टेंशन मत लो, दे आर लाइक सब कर लेंगी। तो जब व्हेनेवर ही यूज्ड टू लुक एट मी ना, तो मैं उनकी आंखों में वो देख पाती थी कि उनको मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। वो चाहते थे कि मेरे 12th में मैं 99 परसेंटाइल लेकर आऊं और मेरा फोटो जो है वो पेपर में छपे, राइट। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वो पूरा नहीं हो पाया। बट उनके जाने के बाद बहुत सारी चीजें जो वो चाहते थे मुझसे, दैट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू डिलीवर। एंड आई नो वो ऊपर से कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, एंड ही वाज फीलिंग प्राउड कि जो मैं कहता था शी इज कैपेबल ऑफ डूइंग इट, एंड शी शोड टू एवरीवन। एंड या दैट वाज द ओनली मोटिवेशन कि सिचुएशंस रही हैं, आई क्लोज माय आईज, मैं अपने पापा का चेहरा याद करती हूँ एंड थिंग्स आर सॉर्टेड कि नहीं यार, यू आर कैपेबल, तुम कर सकती हो अर्शी। Definitely, ma'am. Okay, there's one more question. How and when did you develop your interest in bikes? Okay, there are not many questions coming from bikes, ma'am. आयुषी, मेरी लाइफ में बचपन से क्या है ना कि मुझे अगर कोई चीज के लिए कोई मना कर देता है ना तो मुझे फिर वही करना होता है। और ये मतलब बचपन में छोटी छोटी चीजों से रहा है, राइट। लेट्स से मुझे याद है मेरे पापा मेरी दादी को डेली पैसे देके जाते थे, तो
तो मैं भी रोती थी, मुझे भी चाहिए, तो वो मुझे छोटा नोट देते थे। तो मेरे पास उस टाइम पे इतना दिमाग था कि मुझे छोटा मिल रहा है, उनको बड़ा मिल रहा है, तो मुझे भी बड़ा ही चाहिए होता था, राइट? और अगर वो मना कर दें तो फिर उनकी क्लास लग जाती थी। तो मुझे हमेशा, मैं जब भी बाइक्स चलाते हुए देखती थी, तो ये कि अच्छा ये लड़की के लिए नहीं है। तो मेरा इंटरेस्ट जब डेवलप हुआ व्हेन मेरे फादर की डेथ के बाद हम लोग सारे फ्रेंड्स एक जगह गए थे। तो मेरे फ्रेंड के पास एक बाइक थी एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो बड़ी अच्छी दिख रही है। मैंने उसको सिर्फ लॉक अनलॉक करके खड़ा किया, मतलब उसको उस हैंडल से हटाया। तो ये सेड कि यार नहीं नहीं यार, तू नहीं चलाएगी ये, ये तेरे बस की नहीं है। तो उसने तो मजाक में कहा था, बट दैट ट्रिगर्ड मी एंड उसी के बाद आई डिसाइडेड, मुझे याद है मैंने प्लेटिना से गाड़ी चलाना सीखी थी और मैं अपने को फाउंडर के पीछे पड़ गई थी कि नहीं तुम्हें ही सिखाना है। और ही वाज लाइक अ टॉर्चर, उससे सीखना वाज लिटरली लाइक अ टॉर्चर, राइट? बिकॉज बहुत चिल्लाता था, बट आई वाज लाइक स्थिर। मैंने कार भी चलाना ऐसे ही सीखी है। तो दैट वाज द सिचुएशन फ्रॉम वेयर आई थॉट कि नहीं मुझे चलानी सीखनी है। और जब मैंने एक बार चलाना सीख ली, उसके बाद मेरा जो इंटरेस्ट है, राइट, वो बढ़ता चला गया। Okay, here is another question, ma'am. What is your greatest fear and how do you manage fear? सी द ग्रेटेस्ट फेयर वाज, अभी तो ऐसा कोई ग्रेटेस्ट फेयर नहीं है, बिकॉज मुझे पता है लाइफ में आपके पास इतनी लर्निंग्स है कि आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। बट उस टाइम पे फेयर ये रहता था कि लेट्स से मैं फेल हो गई, राइट? तो मैं तो अभी सबसे लड़ रही हूँ कि नहीं मैं कर लूंगी, नहीं मैं कर लूंगी। तो एवरीबडी विल कम टू माई मॉम एंड से कि तुमने ही, मतलब तो थोड़ा सा सोसाइटी प्रेशर जो है ना कि नहीं चीजें चली, नहीं वर्कआउट करी, तो सबको कैसे फेस करूंगी? जितना कॉन्फिडेंटली चीजों को बोल रही हूँ कि नहीं करना है, तो फिर वो सारी चीजें कैसे होंगी? तो ये मेरी लाइफ का बिगेस्ट फेयर रहा है। और इसको ओवरकम मैंने ऐसे किया है कि मेरी लाइफ में हम क्योंकि स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाली चीजें करते हैं। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं पुणे मुंबई गई थी, आई बीन टू सो मेनी कॉलेजेस आउट देयर, राइट? तो वहाँ पे एवरीबडी वाज लाइक यार मैम आपकी वीडियो देखी है, आपकी वीडियोस देखी है, आपकी वीडियोस देखी है, राइट मैम आपकी वीडियोस ने बहुत हेल्प किया है। सो दिस इज समथिंग व्हाट मेक्स मी कि यार नहीं, वट एवर आई एम डूइंग इन माई लाइफ, हो सकता है अभी कम लोग हैं, और if I'll continue walking on the same road, there will be so many people, who will be feeling good कि इनकी वजह से हमें ये हेल्प हो गई। Definitely. Okay, there's one very interesting question coming up again and again. Ma'am, you seem very energetic. Despite of such a busy schedule, how do you manage to find out time for your hobbies and any specific routine that you follow? मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन में जाते हो तो आपके पास टाइम नहीं होता है। मेरे बहुत सारी हॉबीज हैं, राइट, बट मैं वो सारी हॉबीज फॉलो नहीं कर पाती हूँ। पर राइट, हॉबी डजंट मीन्स कि मुझे अगर बाइक चलानी है, जैसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, राइट? एमपी गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत सारी ट्रिप्स लेकर आती है फीमेल बाइकर्स के लिए, जहाँ आप 3 दिन के लिए आपको जाना है। मैं वो सारी ट्रिप्स पे नहीं जा पाती हूँ बिकॉज ऑफ माई एंगेजमेंट विद माई कंपनी, राइट? आपको डेली शूट करना है, आपके लाइव सेशंस हैं, आपकी टीम है, बहुत सारी चीजें हैं। पर मुझे ऐसा लगता है हॉबी एक ऐसी चीज है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 मिनट 15 मिनट का भी टाइम है, राइट, और मुझे बाइक चलानी है या मुझे कुछ करना है, तो मैंने अगर वो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट भी दे दिया, आई थिंक ये एक ऐसा टाइम है जो हर इंसान अपनी दिन भर के टाइम में से बहुत इजीली निकाल सकता है, राइट? तो अब मैंने अगर वो 15-20 मिनट भी चला ली तो आई एम मोर देन हैप्पी, आई एम मोर देन एंथुसियास्टिक कि यार चलो मैंने इसको छोड़ा तो नहीं है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज your hobbies, your passion with your work, पर आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। मैं कई बार रात में 11 बजे बाइक लेके निकल जाती हूँ, कई बार 12 बजे लेके निकल जाती हूँ, राइट, जो भी फ्री टाइम है, सो दैट भले वो आधे घंटे का ड्राइव हो, राइड हो, या फिर 15 मिनट का हो, उसको करने के बाद आई फील गुड। सो आपको उसके लिए यू नीड टू फाइंड अ वे हाउ यू विल बी एबल टू डू इट। Okay, is every business scalable? You have Yes, another question. majority of business are scalable. It's just that आप किस तरीके से कर रहे हो, राइट?
जैसे मैं अपने एग्जाम्पल पे बात करूँ, अगर हम कॉलेज कभी की बात करें, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्केल इट, राइट? बिकॉज उसको स्केल करने के लिए यू नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फंड्स, राइट? एंड बीइंग यंग एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ पे आपके पास फंडिंग नहीं है, स्केल करना पॉसिबल नहीं था। तो इट्स जस्ट दैट आपको तरीके निकालने पड़ेंगे कि अगर मुझे ये करना है और ये वाला काम नहीं कर रहा है, तो व्हाट इज द ऑल्टरनेट मेथड्स, राइट? जिससे आप उसको स्केल कर सकते हो, राइट? जितनी भी कंपनीज हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आज अमेज़न बहुत सारी चीजें बेच रहा है। जब उसने स्टार्ट किया था तो वो इतनी सारी चीजें नहीं सेल कर रहा था, राइट? दे स्टार्टेड बाय सेलिंग बुक्स ओनली, राइट? सो आप स्टार्ट कहीं करते हो और आपकी जर्नी में आप चीजें सीखते हो, जिससे आप बहुत सारी चीजें और इम्प्लीमेंट करके ग्रो करते हो। तो मुझे लगता है हर बिजनेस स्केलेबल है, राइट? और ये जरूरी नहीं है कि आपने जिस बिजनेस से स्टार्ट किया है, जब आप सक्सेसफुल हो तो आप सेम वही चीज कर रहे हो। बिकॉज स्टार्ट करते टाइम उस जर्नी में बहुत सारे लेसन रहते हैं, और उस लेसन से सीख के आप नई चीजें इम्प्लीमेंट करते हो जो आगे जाके सक्सेसफुल बनती हैं। All right, now let's see if we have any more questions left from the audience. I guess there are no more questions left from the audience, ma'am. So thank you. This was such a valuable session, and you shared great piece of information. You're surely an inspiration for all of us, and you really teach us how to fight all odds. And despite of so many obstacles in our life, we just shouldn't stop anywhere. And अगर इंदौर के लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो पैदल चलो, but चलो जरूर. Don't have that give up attitude in yourself. So thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच फॉर So हैविंग मी। yeah. So this inspiring session now brings us to the end of Cognition. So now I'd like to invite our media and publicity head, Ms. Anushka Srivastav, to deliver the vote of thanks. Uh, Good evening, everyone. I, Anushka Srivastav, on behalf of the entire team IST, would like to extend my hearty gratitude to our honorable speakers, Ms. Arshi Khan and Mr. Abhilash Bhardwaj, who shared their insightful opinions with the students. Each session today wandered us all down the rabbit hole as we were left engrossed in some very enlightening words. Our speakers invested their valuable time from their busy schedules to guide students and solve their queries. Thank you so much, sir and ma'am, for putting forth your findings and answering so many intriguing questions with so many details. A special mention to the entire team, the anchors, and of course, our audience who made this event a huge success. Thank you, everyone.